after 400 hours. An evacuation operation which has been going on for days now, 17 days in all. Workers who were trapped there have been rescued, and the process of rescuing is still on. The workers are being taken to the temporary hospital which has been put up inside the tunnel for medical checkup and acclimatization. And besides the temporary hospital, elaborate preparations have been made for the rescue. In fact, an Air Force Chinook chopper is also on standby for emergencies, and a green corridor has been created to transfer the workers to a hospital. Those are the visuals coming in of Chief Minister Pushkar Singh Dhami and Union Minister General VK Singh, who were there. In fact, they are present at the spot even as we speak. Rat miners, who are essentially laborers used to drilling narrow shafts, as part of a primitive and currently illegal method of coal extraction, had to manually dig the rocks over a 12-meter last stretch that proved too tough, certainly for an American auger drill and several other devices. Naresh Bansal, Member of Parliament of the BJP, and also Santosh Kumar is joining us, who is Senior Advisor, Head of NIDM, which is Ministry of Home Affairs, Government of India in New Delhi. Professor Kumar, we are looking at those very, very heartwarming visuals. Finally, it is about that victory that India has had. This will be seen as a massive rescue effort, India's biggest rescue effort ever. And finally, we have succeeded in ensuring that the workers are safe and they are out. Yes, this is very interesting, and the wholehearted effort which have gone into the rescue operation since day one. And the estimation was made, the teams were sent, highest level of monitoring by the Honorable Prime Minister, and then the constant monitoring by the state government, the local government, multidisciplinary team. They were working, coordination amongst the different stakeholders, they were there. So this is a kind of a very choreographed kind of a rescue operation, although it has taken time. But in the other part of the world, that ends well. The Chile, yeah, that's right. In the Chile also, it was a kind of big rescue operation, went on for long, and they were rescued after many, many days. So finally, the best part of this is that all have been taken out as a kind of a life. This is a great moment for the country, and everyone to be congratulated. Absolutely. From the Prime Minister to the down to the line of the workers. Yes, those are the visuals. Who have gone final. Just a quick update for our viewers. Another ambulance has arrived at that site in Uttarakhand. All the workers are now being taken to the nearby hospital for a health checkup to ensure that they are safe. They have been rescued safely as well. Naresh Bansal, Member of Parliament of Rajya Sabha of the BJP, someone who belongs to the state of Uttarakhand. Bansal ji, क्या बोल सकते हैं, क्या खबर है आपके पास अभी? देखिए, खबर जो आपके पास है वही है कि लगभग पूरे 33 मजदूरों को निकाला जा चुका है, और जिस प्रकार से सारे समन्वय के साथ सारी केंद्र की और प्रदेश की एजेंसियों ने, वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियंस ने, मजदूरों ने, सबने परंपरागत तकनीक, मॉडर्न टेक्निक सबको इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार साहस का परिचय दिया है, और उसमें 41 में से 33 मजदूर बाहर आ गए हैं। मुझे लगता है कि और 15 मिनट में 8 मजदूर भी आ जाएंगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, जिसको डे 1 से हमारे मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाकर के पूरी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर मनोबल भी बढ़ा रहे थे और एक पल पल की खबर ले रहे थे। हमारे गृह मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सबने इसमें बड़ा योगदान दिया है, और मैं समझता हूं कि ये लंबे समय तक याद रखने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें 17 दिन तक अंदर फंसे हुए मजदूरों का मनोबल बनाए रखा गया, उनको गुणवत्ता युक्त भोजन और पानी, दवाइयां, सब चीज उनको। On November 12th, a quick wrap for our viewers. This has been a long rescue operation. Professor C.S. Dubey, senior geologist, is also live with us. Professor Dubey, it begins on November 12th at 4 a.m. when a 1200-kilometer area of tunnel on the Brahmakal Yamutri National Highway had collapsed.
which had led to these 41 workers being trapped in what was a buffer zone. And then there were multiple efforts, multiple, tunnels were created, and finally it was man versus machine, in which the men who were the rat miners, they went inside and found the way out. Yeah, look, I don't call them rat miners. I call them mine excavator heroes, because they are the first one who have done wonders. They have done hard work manually to go deep inside that pipe and try to dig out the things and bring those people out. So I congratulate all the mine excavator heroes, as well as the one who are trapped in, have shown their courage to be there and to have maintain their strength. And that's a wonderful thing which has happened. The second thing is, I congratulate all the team. We don't want to, at this moment, we don't want to complicate things by saying anything else other than that everybody did their work progressively. Everybody was trying to make his mind up. There may be 4 or 5 ways they tried, but ultimately, yes, you are right. The men is always, up and above the machines. Men has mind. They know how to go forward, and machines don't have mind. So I think this is the best way we have done it. The future will be, there will be audits for this. There will be a lot of, it's a SOP. So we can make a lot of SOPs with that, standard operating procedures, by learning these things, that what safety measures we should have before and after the collapses. महाराज सिंह, गब्बर सिंह नेगी इनके भाई हैं, और वो उन 41 मजदूरों में थे. हम देख सकते हैं. महाराज सिंह जी, क्या खबर आई है? गब्बर सिंह जी बाहर निकल चुके हैं? अभी नहीं निकले, अभी तो 1-2-3 घंटे हो लगेंगे. तो परिवार वालों से बात हो रही है? हाँ, मैंने कल की थी बात है, मेरे परिवार वालों से बात हुई थी, मेरे बच्चों से, मेरी बीबी से, मेरे मैडम से, सब बात हुई थी साहब तक. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बाबूनाग मंदिर है वहां पर नाग देवता का, उसका स्थापना होना चाहिए, और वो ये अच्छा काम करे और अच्छा के लिए करे. हम लोग, जो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ कि इतना हिसाब था ये हुआ पर, लेकिन इसमें किसी ने मतलब सीरियसली काम नहीं लिया. मतलब इसमें ऐसा था मतलब कि पहले हम लोग हम देवभूमि वाले हैं, और हमको देवता का पूजन, भजन, कीर्तन और प्रसाद पाना बहुत जरूरी होता है. मतलब इसीलिए ये मतलब कि जो कंपनी ने बिल्कुल गलत काम किया है. उन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी की अपनी चलाई है, और उनको मतलब थोड़ा हिसाब किताब होने चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए. मतलब और महाराज सिंह जी, परिवार में कौन कौन है वहां पर उत्तरकाशी में अभी इस समय? मेरे भाई साहब है वहाँ, बड़े भाई साहब, मेरे ताऊ लड़के हैं, ये थानेदार साहब वहाँ पर श्री जमल सिंह जी, और उनके ऊपर हम सारे जमादार. जी, Maharaj Singh there, Gabbar Singh Negi's brother, who was telling us that he certainly is relieved, but he wants punishment for the company which was actually involved in it. CP Rajendran, Indian geologist, also with us. The rubble many saw as very, very frustrating, I would say, because there were multiple agencies, drilling activities which went on for over 2 weeks, and finally we saw this entire planning succeed. When you look at these visuals, certainly a huge relief for their families, but also multiple agencies involved in this entire rescue effort. What does it say about India's overall achievement in ensuring that our workers are safe? Hello. Well, I mean, I'm very glad, very relieved, in fact, to see all the workers who have been trapped there come out safely, and, they're able to meet their loved ones. It is a great relief for the entire country. There's no doubt about that. And people who have been working, 24/7 for the last 2 weeks have been, they should be congratulated and should be compensated for whatever they have done.
So that's a great thing. I mean, absolutely no doubt about that. I mean, I must congratulate everybody on from top to bottom. But the point here is, I mean, the question is, whether, there has to be a proper inquiry into who should be held accountable for this. Because, I mean, there has been a series of mishaps related to this project. And, I hope the authorities would be looking at into this very seriously. And, those who are, have done, not been following the proper procedures in tunneling or road building has to be held accountable for it. So that is my request here. Ji. Let's listen in to my colleague Kishore, who has spoken to one of the mine evacuator heroes, as Professor Santosh Kumar and Professor C.S. Dubey are rightly calling them. These will be seen as superheroes, Professor Santosh Kumar, who played the most crucial and important role. When all the machines got stuck, when the machines were broken, it was their efforts which must be lauded towards the end. Interesting kind of a learning for all of us in terms of one is that disaster happens, this kind of a thing, and then what are the challenges which we may face in future, and also that what are the strategies which worked and which did not work. So the idea is to draw lessons from here, that how the machine and also that manual, the importance of manual gradually was it has declined over the years in terms of bigger rescue like this. But today, what we see, what we are seeing is that it's not that only the technology can bring the hope, but also that manual work, which can also play a very, very significant role in such kind of a rescue operations. So this is a combination of both that high machine and also that technology, and plus that manual and understanding of that. So idea is to that combination should work in future. So that what does the case of the future. But today, when we see that how people who have survived in the trapped area, and where the communication was established from the very second day of the whole of the operation. So that is the most important thing which had happened, that the communication between the victims and the rescuers got established. So that played a significant role in terms of motivating them inside and always having hope that yes, they would be rescued. This was a very important thing. So what I'm saying is that technology is one, the manual work is one, but also the psychosocial intervention in such kind of keeping contact, and even today, then they are coming out. A lot of kind of a mental trauma must have been there, but the idea is to have that kind of also be addressed. Other than that, what is the physical healthcare system? Yes. So I'm sure there must be, this is a very good learning for everyone. Professor Kumar, just hold on to your thoughts. Let's listen in to one of the mine evacuator heroes as he's speaking. तो तुम्हारी भी ठीक लग रही है और बिल्कुल तंदुरुस्त ऐसे ही वो हैं सर, ऐसे ही है, ऐसे ही हैं बोलो। अच्छा, क्या खुशी थी उनके बेचारे में जैसी आपको देखा? बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी थे, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप भी अंदर काम कर रहे थे? हाँ, ये भी अंदर। चलिए, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। देवेंद्र कहाँ से आए? जिला बुलंदशहर से हैं। अच्छा, कितना मुश्किल था और इस काम को करके कितनी खुशी? आप पे बहुत नजरें थी कि आखिरी वो क्षण थे जिसको करना आपने था। बढ़िया करा था हमने, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, बढ़िया तरीका से उनके दौरे पहुंचे हैं। उन्हें पहुंचते ही उन्होंने ना बहुत खुशी मनाई, हमारे से गले मिले बहुत, उन्होंने बादाम भी खिलाए हैं। अच्छा, बादाम भी खिलाया है। आप हीरो बन चुके हो, आप ही की वजह से वो लोग आए, बहुत सबने मेहनत करी है, लेकिन जो आखिरी क्षण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। कैसा लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है? कठिन कितना था वहाँ पे? कटिंग 1500 15 मीटर। 15 मीटर? हाँ जी। ज्यादा था? नहीं, ज्यादा नहीं था। अच्छा, अंदर जो मिले जो लोग थे वो 41 लोग, वो आप लोगों को देखकर आपकी जो टीम है पूरी, कैसा लगा और किस तरीके? हम भी उन्होंने को देख के खुश हो गए थे सर, वो हमें देख के खुश हुए थे, हम उन्होंने को देख के खुश हुए थे। आपने पता है कि बहुत बड़ा काम किया, आपको लग रहा है? जी, पूरा देश आपके लिए वो कर रहा है कि आपने बहुत बड़ा काम किया। जी 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 सर। आपका सर नाम? सर मेरा नाम वकील हसन है। आप इनके और मैं टीम लीडर हूँ सर इनका। टीम लीडर है। यस सर। ये लोग कहाँ से आए? और क्योंकि आज पूरा देश इनको देख रहा है और ये वो लोग थे जो आखिरी
प्रतिशत कठिन था, जो उम्मीदें टांगे, इन्होंने पूरा किया। जी बिल्कुल सर, इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है कि सरिया काट के, पाइप काट के, जिस तरीके से ये लोग आगे गए हैं उन्हें निकालने के लिए। लेकिन एक चीज़ बहुत कमाल किया, हमारे अंदर भी तो जज्बा ऐसा था कि उन्हें निकाल के लेकर आना ही है। ये हमारे लिए एक तरीके अपॉर्चुनिटी क्या, ये लाइफ में एक चांस था हमारे लिए, और ये किसी को मिल पाता। मैंने जब इनसे शुरू में बात करी थी तो उन्होंने वादा किया था कि अब हम आ गए, जब हम तभी बाहर निकलेंगे जब उनको लेके आएंगे। बिल्कुल सर, हमने है ना ये कर लिया था प्रण की 24 घंटे हमें नॉन स्टॉप काम करना है और उन्हें लेके बाहर आना है, और ये 24 घंटे काम किया हम। अच्छा, इनको देख के लग नहीं रहा है कि ये थके हैं, ये इनको लग रहा है कि अभी शायद और खुदाई भी कर दे कहीं। हमने प्लानिंग से किया ना सर, 4 लड़के बराबर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग हैं जिनके भरोसे पूरा देश था कि कम से कम वो जो आखिरी 20% रह गया उन पर ये आएंगे और खुदाई करके लाएंगे, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जिसपे सभी को लग रहा था कि वो 24 घंटे में होगा, लेकिन 24 घंटे से पहले काम कर दिया है और ये अंदर पहुंचे। उनका रिएक्शन अलग था क्योंकि उन्होंने 17 दिन बाद कोई इंसान अंदर देखा है उन 41 के अलावा। फिलहाल वो मजदूर लगातार बाहर निकल रहे हैं और लगातार विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Let me go back to the guest, Professor C.S. Dubey. You heard from those mine excavator heroes, as you're calling them, and you know the last mile push that came from them is something that they would be lauded for. You know that yes, they were being the workers were being provided with all that they needed in terms of the food and other necessities, which included water and medical supplies. But it was getting increasingly frustrated towards the end when all the machines were failing. Yes, because you know this area, if we really look into the whole Himalaya, especially this area, the lesser Himalaya to middle Himalayan portions, you know, the landslides in these areas are too many, and old landslides are in Uttarkashi. We have mapped the old landslides. There are too many old landslides. And what happens in the old landslide, that the earth becomes compact, the soil becomes compact, and it looks like that it is very hard and compact. But just slightly rain or slightly movement below the, you know, mountains, if you do the house of one of the rescued workers, संतोष जी की वाइफ हमारे साथ जुड़ रही हैं, अनारकली, वहां पर आपकी संतोष जी से बात हो गई? जी मैम, आपकी बात हुई? मुझे उन्होंने क्या बताया कि कब आ रहे हैं घर वापस? वो उन्होंने तो अभी नहीं बताए हैं, कुछ नहीं, मतलब कॉल किए थे तो थोड़ी देर, मतलब 4-5 मिनट बात हुआ, कह रही थी कि हम लोग निकल गए हैं, अभी बाद में कॉल करेंगे, और बात ही नहीं हुआ। अनारकली जी, जरा सा कैमरा दिखाइए, वहां पर क्या हो रहा है, आपके परिवार में वाले लोग अभी क्या कर रहे हैं, जरा दिखाइए। आप अपनी तस्वीर भी दिखा दे रहे हैं जी, जरा जरूर दिखाइए। तो दिवाली हो रही है? जी मैम, दीपावली मना रहे हैं। आप लोग दिवाली अभी मना रही हैं? घर परिवार में और कौन कौन है? सासू माँ है और ननद और एक मेरे भांजी और दादी अम्मा और मतलब बड़ी मम्मी, सासू मम्मी, और कोई नहीं जी। और मेरे जो ससुर है वो एक्सपायर जलाए जा रहे हैं। आज तो बहुत ही अहम दिन है,
संतोष जी सही सलामत वापस आ गए हैं 17 दिनों के बाद। उन्होंने क्या क्या बात बताया आपको 5 मिनट में जो आपकी बात हुई? जी मैम अभी तो कुछ नहीं बताए हैं वो लोग। जी 5 मिनट आपकी जो बात हुई उसमें क्या क्या बात हुई? वो क्या है? उनकी तबीयत ठीक है? हाँ मैम उनकी तबीयत ठीक है, कह रहे थे कि ठीक है हम लोग। ठीक है। अच्छा, और परिवार से वहाँ पर कौन है उत्तरकाशी में? परिवार से मेरा देवर गए हैं वहाँ पे जी। जब ये हादसा हुआ था जी जी जी। So that was Anarkali, wife of one of the rescued workers now, Santosh. It's celebration time in the families. You can see those diyas being lit up. It's Diwali, though delayed Diwali, but Diwali which is happening in multiple homes of those 41 workers. Those are the visuals also coming in of Chief Minister Pushkar Dhami. Anarkali, अगर आप हमारी आवाज सुन सकती हैं? जी अनारकली जी, घर में दिए जल रहे हैं, पटाखे भी हैं, मिठाई और लड्डू भी खाया आप लोगों ने? जी मैम। तो ये जो 17 दिन थे आप लोग बहुत परेशान थे, क्या किससे बात होती थी वहाँ? ओकी टोकी द्वारा हो रही थी, 2 बार हुआ था और उसके बाद तो कॉल की बात नहीं हो पाई जी। उन्होंने क्या बताया? खाना समय पर मिल रहा था? खाना तो समय से वो कह रहे थे, कल बात हुआ था जी, तब वो कह रहे थे कि समय से अभी नहीं मिला है, अभी मिलेगा 9 बजे। जी जी। तो वो उनकी तबीयत 17 दिन में सही रही और अब वो बाहर आ गए हैं, तो वो आप लोग के घर वापस कब आ रहे हैं? ये तो अभी नहीं बताए हैं मैम, क्या बता दें? चलिए बताइए जी। तो those are the visuals coming in of the house of one of the rescued workers, Santosh. His family is celebrating Diwali, those diyas being lit up. They have reasons to celebrate, though delayed Diwali, but yes, why not? When it is about those 17 hours of 17 days and 400 hours of trauma, complete mayhem, and finally there is that light at the end of a dark tunnel, and the light is coming through those diyas which are lit up now at Santosh's home. Santosh is among those 41 workers who were trapped inside that Silkyara tunnel. All of them have been rescued, and it's about smiles and celebrations in the families that have reasons to celebrate now. News and updates will continue on the other side. My colleague Vishnu Som is here in the studio as well. We are taking a short break, but this remains our top focus. We are leaving you with those visuals of workers being rescued.